ये कॉन्सेप्ट मैंने 4 साल पहले चालू किया था। आई एंड माई फ्रेंड वॉज देयर, तो हम लोग ने ऐसे ही सोचा कि कुछ नया कुछ चालू करते हैं, यूनिक। ये मशीन है, मशीन के अंदर 50 kg आइस रहता है। वो मशीन ऐसे बनाया है कि वो -30 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो मशीन जैसे रोटेट ऑटोमेटिकली आइस फ्रोजन होता है। उसके ऊपर आप जो भी फ्रूट बोलेंगे वो फ्रूट क्रश करते हैं और मिल्क डालते हैं। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव, कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ओनली फ्रूट्स एंड मिल्क। ये आइसक्रीम ऐसा है जैसा वो नूडल्स कॉन्सेप्ट जैसे आ रहा है, और आप खाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप नेचुरल फ्रूट्स खा रहे हो। पेरू है, इसमें जो हम लोग मिर्ची पाउडर डालते हैं और सीजनल फ्लेवर, इज डिपेंड अपॉन फ्रूट, विच एवर फ्रूट यू लाइक। लोगों को ये आइसक्रीम बहुत अच्छा लग रहा है और समथिंग डिफरेंट है, एंड वी मेक इट लाइव इन फ्रंट ऑफ यू। बेसिकली ये लोगों को आइसक्रीम देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मज़ा आता है, इसलिए लोग यहाँ पे खड़े रह के 15-20 मिनट्स वेटिंग में वेट करके वो आइसक्रीम खाते हैं। बहुत अच्छा मिला है, इसलिए हम लोग ने ये बिजनेस 4 ईयर्स अगो हम लोग ने चालू किया। स्टिल वी आर कंटिन्यू।